Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise you can see 13.5 up to question number 3rd, right? So now in this video we are going to move ahead from that. That means this video will be going to be discussed from question number 4th, right? So यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि इस question number 4th के अंदर हमें क्या given है. तो सबसे पहले यहाँ पे given है we have to find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of rupees 30 per meter square, right? So यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सपोज कीजिए एक रोड है, उसके अंदर क्या करना है, एक क्यूबॉइडल शेप का एक गड्ढा खोदना है. यू कैन सी डिग करना मतलब एक गड्ढा खोदना, राइट? सो यहाँ पे इस जो हम पिट क्रिएट करेंगे, गड्ढा क्रिएट करेंगे रोड पे, उसकी गड्ढे की जो लेंथ होगी वो कितनी गिवन है, दैट इज 8 मीटर. देन ब्रॉड का मतलब है कि उसकी ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर. एंड कितना डीप होना चाहिए रोड के, दैट विल वर्क एज द हाइट ऑफ दैट क्यूबॉइडल पिट, राइट? सो दैट विल बी 3 मीटर्स, राइट? सो ये हमें गिवन है. यहाँ पे हमें निकालनी क्या है, कोस्ट निकालनी है, कितना खर्चा आएगा इस खड्डे को खोदने के अंदर, राइट? यू कैन सी इफ देयर इज द रेट ऑफ रुपीज 30 पर मीटर स्क्वायर. सो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर की बात करूं सिर्फ इतने से की, सो इसका चार्ज जो है कितना है, दैट इज रुपीज 30, राइट? सो मैं पूरी यू कैन सी क्यूबॉइडल पिट की क्या निकाल लूंगा, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूंगा एंड देन यू कैन सी मल्टीप्लाई दैट विद द 1 मीटर स्क्वायर चार्ज, दैट इज 30, राइट? सो यहाँ पे पहले मैं इस गड्ढे की मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालता हूं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इन द सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट द गिवन थिंग. सो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल पिट. So that is given to us as you can see 8 meters. Then the breadth of pit is you can see 6 meters and finally the height of pit is 3 meters, right? So this is what is given to us in this question. Now let us find out the volume here. So यहाँ पे we know the volume, if I just correct that. So we know the volume of, you can see cuboid is L into B into H, right? So यहाँ पे हमारे पास length given है, that is 8, then breadth is 6, and then the height is 3, right? So if I just multiply this, so 8 into 6, that is 48, 48 into 3, let me just check out. So 48 into 3, so 3 8s are 24, 2 carry, 3 4s are 12, 13, 14, right? So we have got 1 4 4, right? Getting my point? If I just cross check, so 3 8s are 24, 2 carry, 3 4s are 12, 13, 14, right? Exactly correct answer now in meter cube, right? So ये क्या होगी, इस क्यूबॉइडल पिट की वॉल्यूम होगी, right? Now हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर डिग करने का चार्ज कितना है, 30 रुपीज. सो टोटल इस क्यूबॉइडल पिट जिसकी वॉल्यूम कितनी है 144 मीटर क्यूब, इसको डिग करने का चार्ज क्या होगा, 144 multiply by 30, right? So let me just now find out the cost of digging the cuboidal pit at 30 rupees per meter cube, right? So अब इसमें per meter cube होगा. Let me just cross check the answer here. So if I just cross check, so there is meter cube. Remember I have just written square here, so यहाँ पे cube आएगा. Now you can see per meter cube आपको यहाँ पे डिग करने का चार्ज कितना था, 30. So टोटल जो आपके पास वॉल्यूम निकली है, that is 144, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, simply by the charge of digging 1 meter cube, right? So total cost जो इस पूरे cuboidal pit को डिग करने में आएगी, that will be you can see 0 तो as it is आएगा. Now 144 into 3, let me just check out. So 3 4s are 12, so 2 1 carry, 3 4s are 12 plus 1 13, 1 carry, 3 is 3 plus 1 4, so 4 3 2 0 rupees, right? So this will be the charge to dig this cuboidal pit, right? So quite easy, just you have to simply first find out the volume of the cuboidal pit and then multiply it with the charge of 1 meter cube, that is 30 rupees, to find out the total cost of digging this cuboidal pit, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So this time question number 5th is given to us as that the capacity of a cuboidal tank is
50,000 liters of water, right? So यहाँ पे हमें एक क्यूबॉइडल टैंक की कैपेसिटी गिवन है कि वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है अपने इंटीरियर में स्टोर कर सकता है, राइट? सो हियर यू कैन सी 50,000 लीटर ऑफ वाटर is, you can see what a cuboidal tank can actually store. So वो उसकी क्या हुई? Capacity हुई, right? Now you can see we have to find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter, right? So यहाँ पे आपको क्या given है? एक तो length given है, that is 2.5 meter. Then हमें यहाँ पे depth, which is the height here for the, you can see, cuboidal tank, that is given to us as 10 meters, right? So सबसे पहले यहाँ पे एक cuboidal tank बना लेते हैं. You can see, so joining the vertices. So here you can see this is a cuboidal tank. Now हमें पता है कि ये कितना वाटर को होल्ड करके रख सकता है, that is 50,000 liters, right? So अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करता हूं, so you can see in the solution, first of all I'm going to write the given thing, right? So हमें यहाँ पे given क्या है? You can see the capacity of the tank is equal to the volume of water it can store, right? So वो कितनी है? 50,000 liters, right? So यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं that since we know that 1 meter cube is equal to 1000 liters, right? ये हमें पता है कि 1 meter cube में कितने होते हैं? 1000 liters, right? So अगर मुझे मीटर क्यूब को लीटर में करना है, so we have to multiply by 1000. But if we have to convert liter into meter cube, then we have to actually divide that by 1000, right? So हमें यहाँ पे अपोजिट करना है कि लीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में, right? So हमें क्या करना होगा यहाँ पे? इस लीटर वाली क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड करना होगा. So that will be, you can see, 50 meter cube, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कैपेसिटी जो है, you can see the volume, actually it can store, you can see the water of 50,000 liter, or you can say 50 meter cube is going to be the capacity of this, you can see, cuboidal tank, right? Now we know that the capacity will be, you can see, calculated by L into B into H, right? So यहाँ पे आपके पास capacity already present है, that is 50. Now what is the length here? You can see we already know यहाँ पे इसकी length कितनी है? 2.5 meters, right? Then हमें यहाँ पे depth भी पता है, that is going to be the height. You can see, so this is the length and height given to us. So यहाँ पे मैं length की जगह कितना रख दूंगा? 2.5. Then breadth, you can see we have to find out in this question, so keep it as it is. Then the height is given to us as 10, right? So if I just further solve this, you can see, so यहाँ पे क्या होगा? ये 2.5 और ये जो 10 है ये डिवाइड में आ जाएंगे. यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ आएंगे? 50 के डिवाइड में. So 2.5 into 10, right? Equal to, you can see, breadth. Now अब डेसिमल रिमूव कीजिए तो ऊपर क्या आएगा? एक जीरो आ जाएगी, राइट? बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है. सो यहाँ पे डेसिमल रिमूव करता है. 25 1 25, 25 2 जा 50 एंड अ जीरो, राइट? सो यहाँ पे 20 अपॉन 10 आ गया. सो जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ब्रेड्थ कितनी आ गई? 2 meters. You can see here 2 upon 1 क्या था? 2. So this is the breadth here which we have to find out in this question of this cuboidal tank which can hold this liter of water, right? So first step is you have to convert this given volume of water in meter cube, right? So that can be the capacity of, you can see, this cuboidal tank. That then we know that capacity is L into B into H. So we know the length and the height. So simply substitute that and transfer it in the division. You will get the breadth out here, right? That is 2 meters. So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So this time you can see question number 6 is given to us as that a village having a population of 4,000 requires 150 liter of water per head per day, right? So आप देख सकते हैं एक पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है एक दिन की ऑफ वाटर दैट इज गिवन टू अस एज 150 लीटर्स, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विलेज के अंदर टोटल पर्संस कितने हैं? 4,000 एंड एक पर्सन की एक दिन की वाटर की रिक्वायरमेंट गिवन है हमें दैट इज 150 लीटर्स ऑफ वाटर, राइट? सो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन भी गिवन है दैट इज 4,000 पीपल, राइट? सो लेट मी फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. सो द पॉपुलेशन
of village is equal to 4,000, right? So यहाँ पे total number of people कितने हैं? 4,000. Now we can see again, you can see the given thing is the water requirement. Let me just correct that. So the water requirement of per person per day is equal to, you can see, 150 liters, right? So this is the quantity of water required by, you can see, per person per day, right? Now further you can see it has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. So यहाँ पे tank की क्या है? Dimensions given है, that is length into breadth into height, right? So यहाँ पे बात करते हैं. सबसे पहले the given thing is given that the length of tank is 20 meters, then the breadth is 15 meters and the height, let me just correct that. So the height is given to us as 6 meters, right? So ये हमें यहाँ पे given है एक tank की measurements, you can see the dimensions, right? Now हम क्या करेंगे? पहले इस tank की क्या निकालेंगे? Capacity, right? So how we will calculate the capacity of tank? The capacity of tank will be calculated by length into breadth into height, right? So let me just substitute the values. So length कितनी है आपके पास? 20, breadth कितनी है? 15 और height कितनी है? 6. So let me just multiply this. So 20 into 15, you can see there will be 300. 300 into 6, there will be 1800. You can see meter cube. So ये क्या आ गई? एक tank की capacity आ गई, right? So if I just draw a tank here like this, so cuboidal tank. So इसकी capacity मैंने निकाल ली, that is 1800 meter cube, right? Now इसकी capacity से हमारा क्या मतलब है कि कितना volume of water ये hold कर सकता है, right? So अगर मैं इसको लीटर में convert कर दूं, so that will be the capacity of this tank to hold that amount of water, right? But यहाँ पे हमें given है कि एक पर्सन की एक दिन की कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है? दैट इज 150 लीटर्स, राइट? और टोटल पर्सन हमें पता है कितने हैं? 4000. सो अगर मैं इस 4000 को 150 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल 4000 पीपल की एक दिन की वाटर की रिक्वायरमेंट मेरे पास आ जाएगी. दैट इज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट विलेज, राइट? सो यहाँ पे मैं अब क्या करने वाला हूं? सिंपली फाइंड आउट करने वाला हूं. यू कैन सी द रिक्वायरमेंट ऑफ water for 4000 persons, right? So if I just rub this, so requirement of water for 4000 persons per day will be simply 4000 into 150 liters, right? So यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, so 4 into 15, that will be 60, and 3 and 1 4 zeros, right? So this is going to be the multiplication. Now this is in liters, right? So अब अगर आप देखें ध्यान से, हमें एक्चुअल में निकालना क्या है कि कितने दिन ये जो पानी है this is going to last. So for how many days you can see this water will last, right? So कितने टाइम तक पानी चलेगा इस जो टैंक के अंदर प्रेजेंट है टू फीड 4000 पीपल, राइट? सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 4000 पीपल की एक दिन की रिक्वायरमेंट पानी की कितनी है? दैट इज, यू कैन सी 6 then 5 times 0, 6 lakh liters, right? नाउ जैसा कि आपको पता है कि इस टैंक के अंदर कितना पानी आएगा? दैट इज 1800 मीटर क्यूब, राइट? सो अब जैसे ये तो कैपेसिटी मीटर क्यूब में है और ये जो गिवन है 4000 पीपल की पर डे की रिक्वायरमेंट, दैट इज इन लीटर्स. सो पहले मैं इस लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेता हूं? मीटर क्यूब में. सो हाउ वी विल डू दैट? वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, राइट? सो अगर मुझे लीटर को मीटर क्यूब में करना तो क्या करना होगा? डिवाइड बाय 1000. सो यहाँ पे मैं अगर 5 टाइम्स 0 यानी कि 6 लाख को किससे डिवाइड कर दूं? 1000 से. So that will be in meter cube, right? So if I just solve this, यहाँ पे 3 zeros reduce हो जाएंगे तो 600 meter cube आ जाएगा, right? Now हमें निकालना है कि कितने दिन ये पानी चलेगा
to feed these 4,000 people, right? Now, I have told you in the previous questions, in the previous video, that sometimes when we have to find out the quantity, or you can see the number of something, what we will do is divide the, you can see, complete, you can see the capacity by the single thing, right? So यहाँ पे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें. यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है that is 1800 meters, उसको मैं डिवाइड करूंगा by the requirement of water for 4,000 people, right? इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? Simply the time for which this water will last, right? So for how long you can see this water will work, right? So if I just rub this, and let me just cross check the you can see equation part here. So that will be, if I just check out, so that is for how many days, right? So that is the right thing. So हमें यहाँ पे निकालना है कि number of days. So मैंने आपको बताया जब भी हम किसी number of something count करते हैं, so what we will do is, so number of days water will last. कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे? Capacity of टैंक को डिवाइड करेंगे by the requirement of water of 4,000 persons, right? So this is what we have to do here. So if I just rub this, now you can see we know the capacity of tank was calculated by us, that is 1800 meter cube, right? Divide by, you can see, the requirement of water for 400 persons per day. So इतनी यूजेज होती है पानी की एक दिन के अंदर, right? That is 600 meter cube. आप देख सकते हैं मैंने लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया था. So this was the water requirement of 4,000 persons per day. So 600 meter cube. Now you can see this will cancel out. So 2 zeros कट गई. 6 1 6, 6 3 जा 18. So 3 days is the time duration for which the water of this tank will actually last, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिन में ये 4,000 persons जो हैं कितना वाटर कंज्यूम कर लेते हैं, that is 6 लाख लीटर्स, right? So यहाँ पे कितने दिन पानी चलेगा? 3 days के लिए पानी चलेगा यहाँ पे इस टैंक का to feed the persons, right? So यहाँ पे हमें निकालना क्या था? Simply for how many days you can see the water will last. So इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको. Remember always when we have to calculate the number of something, we will divide the capacity of the whole by the single thing, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिन की requirement को मैं divide करूंगा total capacity of this tank को, right? So this is how you have to solve such type of questions. So students, let us move on to the next question now. So this time question number 7 is given to us as a go down measures 40 meter into 25 meter into 15 meter, right? So यहाँ पे हमें go down का measurement given है, the dimensions which are length, breadth and height, right? Now further you can see we have to find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the go down, right? So यहाँ पे आपके पास wooden crates हैं इस dimension की, that is the length, breadth and height, right? So कितनी wooden crates जिनकी dimensions ये है इस go down जिसका size ये है इसमें store हो सकती है. Now again you can see here we have to simply calculate the number of wooden crates, right? So similarly जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब भी हमें number of something निकालना होता है, so हम पूरे you can see यहाँ पे क्या करेंगे, go down की capacity को, so the capacity of go down, let me just correct that, so the capacity of go down को मैं किससे डिवाइड करूंगा? Simply by the volume of one crate, right? So एक crate की volume से मैं पूरे go down की capacity को डिवाइड करूंगा, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगी? Number of wooden crates, right? So this is the logic how we will solve this. So let me first rub this. So now let me just start off the solution by the given thing. So हमें given क्या है? So given that you can see the length of go down, that is 40 meters, then the breadth
is given to us as 25 meters. Then the height is given to us as 15 meter, right? So यहाँ पे हमें length, breadth और height given है गोडाउन की. Now you can see also हमें क्या given है? The measurement of, you can see the length of, that will be better. So length of wooden crate is, you can see 1.5 meter. Then the breadth of the wooden crate is 1.25 meter, and then the height of wooden crate is 0.5 meter, right? So ये हमें given है इस question के अंदर. So let us now find out, you can see the capacity of go down, right? So that is calculated by length into breadth into height, right? So यहाँ पे हमें length given है of go down, that is 40 meters. Then the breadth is simply 25 meters and the height is 15 meters, right? So leave this as it is, you can see in meter cube, right? So I will tell you how to actually solve this. So यहाँ पे मैं इतना ही छोड़ देता हूँ. Now you can see I'm going to calculate the, you can see volume of wooden crate, right? So volume of one wooden crate is, you can see, again calculated by length into breadth into height. So यहाँ पे हमें length given है wooden crate की, that is 1.5 into breadth is 1.25 into the height is 0.5. That will also be in meter cube, right? So अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस को नंबर देता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड. सो अब मैंने आपको बताया था जब भी हमें किसी भी चीज का नंबर निकालना था, द क्वांटिटी, द नंबर ऑफ समथिंग, व्हाट वी विल डू इज सिंपली डिवाइड द कैपेसिटी ऑफ द होल गो डाउन by the volume of one wooden crate, right? So this will give us the number of wooden crates that can be stored in the go down, right? So let me just now rub this. So you can see, so the number of wooden crates that can be stored in go down will be simply you can see dividing the capacity of go down by, you can see, the volume of one wooden crate. Getting my point? So let me just do that. So capacity कितनी है go down की? So that is 40 into 25 into 15. So मैंने as it is इसीलिए रख दिया ताकि easy हो जाए solve के लिए, right? Then divide by the volume of wooden crate, that is 1.5 into, let me just correct that, so 1.25 into, you can see 0.5. अब मैं यहाँ पे इसको solve करने वाला हूँ. So let me just tell you, यहाँ पे decimal remove करूंगा तो ऊपर एक digit आएगी, 0 आएगी, क्योंकि decimal के बाद एक digit थी. So यहाँ पे मैंने इसको remove कर दिया. Now इस decimal को remove करूंगा तो इसके बाद दो digits है, so दो zeros आएंगी, right? So this is also removed. Now again एक decimal remove करूंगा, so that will also give 1 0 in the numerator, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने decimals remove कर दी इनकी. Now if I just have to reduce this, so आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 2 जा 10, तो 5 के टेबल पे इसको reduce कर दिया. Now further आप देख सकते हैं 25 5 जा 125, so 25 4 जा 100. So दोनों को 25 के टेबल पे reduce कर दिया. 25 5 जा 125, 25 4 जा 100. नाउ फर्दर अगर मैं ध्यान से देखूं तो 15 से 15 1 के टेबल पे रिड्यूस हो जाएगा. 15 1 जा 15, 15 1 जा 15. नाउ अब इसमें डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपके पास 5, so 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, right? Now let me just make some space below. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में बचा है सिर्फ, डिनोमिनेटर में 1 ही हो गया. So let me just directly multiply 40 by 25 by 2 into 4 into 2, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 into 4 that is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 40 that will be 640, right? So into, you can see 25. So this is what we have to solve. Now 0 as it is आएगा. Now 64 को मैं किससे multiply कर दूंगा? 25 से. So let me just do that. So 64 into 25. So 5 4 is 20, 0 2 carry. 5 6 is 30 plus 2 32. Multiply now 2 4 is 8, 2 6 is 12.
So let me just add them. So 0, there will be 6, 1. So 1, 6, 0, and a 0 again of this, right? So 16,000 wooden crates can be stored in the godown. You can see here, right? So this is how you have to solve such type of questions here.